Hello everyone, I hope I'm audible to everyone. Good evening everyone. Am I audible? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, wonderful. I welcome you all to our today's session. I am Ekta Sharma and today will be one of the very famous IAS officers will be joining us, an inspiration to a lot many people, all the UPSC aspirants. बस 2 minutes आप wait करिए and she will definitely be joining us in a moment. Everyone, good evening. Today we will be joined by IAS Srushti Deshmukh and she will be joining us in a minute. Please stay patient. थोड़ी देर दीजिए. I can see that people are requesting me to rotate the camera. Bache, I would definitely like to rotate the camera, but for some reasons we need to keep it in the landscape mode. I hope आप लोगों को ज़्यादा inconvenient ना हो. She is joining us in a while. थोड़ी देर में वो बस 1-2 minutes में join कर रही हैं. Please be patient.
गाइज आई नो कि आप लोग सब मुझे कैमरा रोटेट करने के लिए बोल रहे हैं, बट आई कैन नॉट रोटेट द कैमरा बिकॉज कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें लैंडस्केप मोड रखना पड़ता है. Good evening, everyone. Uh, I see that many students are asking me to speak in English. I will try to keep it bilingual because there are others who want me to speak in Hindi and there are others who want me to speak in English. I think we'll try to keep this conversation bilingual. Hi. Could we change the orientation of yours to vertical? Hi, Srushti ma'am. Hi, hello. Can you hear me? You're not audible. Okay. Is it? What makes you not audible though? Am I audible now? Um, you're still not audible, ma'am. Can you please check your audio? Mm, I'm not. The audio is working. Can the audience please tell me, am I audible? You both are audible, is what the people are responding. You might want to check. Those who joined the session, can you confirm to me, is my voice coming? Hello. I'm getting a reply as yes. So I think I'm audible to the audience, but not to the moderator. So this is an issue. I'll just do a quick call with them. Okay, I have conveyed to the moderator. I'm sure that he'll be able to start the session soon.
I welcome you all to the today's session on answer writing, improving scores in GS mains. And the session is basically focused on writing, how to write better answers, improve your answer writing skills, and how to score marks in the general studies part of the mains examination. Am I audible to you? Yeah, now I think you're audible, ma'am. Okay, sounds good then. Yeah. Good evening, everyone. Today, on behalf of UPSE Guide, I welcome IS Srushti Jayant Deshmukh, a very well-known face and an inspiration to many. I welcome you, ma'am. Recently, ma'am, आपकी जो book आई है, it has had such a tremendous response from students and candidates. So सभी का इतना अच्छा response आया है. Can you please tell me few things about the books, जो important chapters, आपका कहाँ से वो inspiration आया कि ये book हमें लिखना है? First of all, I would like to thank everybody because all the responses that I have been getting for the past 10 to 12 days of the release of the book, सब बहुत positive रहे हैं सभी के responses and I am immensely thankful कि ये book कहीं ना कहीं सबको help कर रही है. So as you told कि the inspiration of the book, तो when I was also preparing for UPSC, we had multiple sources to tell us कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या books लेनी है and all that. But when it comes to answer writing, I had to, follow a lot of blogs, take help from some mentors, and try to make my own strategy. So I thought कि सारी चीजों को एक जगह पे कंपाइल करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आना चाहिए, जो कि किसी भी एस्पिरेंट अगर उसको उठाता है, उसको पढ़ता है, तो ही और शी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अप्रोच कैसे करना है आंसर राइटिंग को एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बेटर मार्क्स लाने. सो दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैड इन माय हेड एंड आई वर्कड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड worked on it for a couple of months and I think right now जो book I'm able to जो मैंने सबके साथ share की है, जो I think it has been helpful to the aspirants. So I thank them because they were the inspiration for this book. Ma'am, I would like to congratulate for that. जो actually मैं और हर ये जो ये about answer जितने भी कैंडिडेट का मेन क्वेश्चन यही रहता है. So congratulations and thank you for taking such a big step for all the. Now I would really ask another important. मैम आपके अकॉर्डिंगली है जो इस बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से वो पढ़ने चाहिए. Yes, so 3-4 chapters ऐसे हैं जो which is the gist of the book, I will tell. Especially regard to decoding the question and decoding the answer. So I have started the book by conveying to the readers कि answer writing important क्यों है, और मैं अभी फिर से I'll share it with you. Basically the rank and the final service that you are allotted after your selection in UPSC examination depends on your score of the mains and your interview. So interview is interview के marks around max 200 250, इससे ज्यादा marks हम interview के नहीं जोड़ पाते हैं final score में. तो जो मेन हमारा स्कोर बनता है पूरा, वो बनता है जीएस मेंस से और जीएस एंड ऑप्शनल एंड एसए पेपर, द मेंस पेपर से. सो इट इज वेरी एसेंशियल कि हम अपने आंसर राइटिंग स्किल्स पे वर्क करें. मतलब नॉट ओनली द प्रेपरेशन बट ऑल्सो हाउ वी प्रेजेंट आवर आंसर्स इज व्हाट वी शुड बी वर्किंग ऑन. In that regard, I have tried to explain to the readers कि हमें क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है. When I say decoding,
आई मीन कि कई बार क्या होता है, हम ये लिखते हैं जो हमें लगता है कि हमें, जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें कोई टॉपिक लिखा हुआ है, सो वी जस्ट राइट वॉट एवर वी नो रिलेटेड टू दैट टॉपिक. बट इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इट इज वेरी असेंशियल कि हम सही तरीके से समझें कि एग्जामिनर हमसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. एंड देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइटिंग व्हाट यू नो and writing what is expected in that question. So इस particular line को समझने के लिए I have included chapters like a question directive को मैंने पहले explain किया है कि critically examine को how do you attempt a question word like analyze or examine or describe, इनको कैसे handle करना है. Then in the chapter decoding the answer, so after you have understood the question, then how do you approach the answer, क्या क्या उसके steps होंगे. बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा सेम रहता है आंसर का, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, लेकिन किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हमें इम्प्रूव करना चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड बी इंक्लूडिंग इन दैट. देयर इज वन चैप्टर इन माय बुक नेम्ड द सॉल्ट ऑफ आंसर राइटिंग, and I call these things salt because these are not to be used too much, and if you don't use it, then also the final output of your answer will not be very good. So moderately, there are 12 to 13 points of addition जो हम किसी आंसर में कर सकते हैं, और जिससे कि आपका आंसर it can fetch you more 1 or 2 marks extra. So basically fight उसी की है, क्योंकि हम सभी लोग सेम रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, वी ऑल रीड सिमिलर न्यूज़पेपर. So what will differentiate you in the final score in your examination is how your answer is different, how it contains 1 or 2 good more points which can fetch you more marks. So ये जो particular chapters हैं book के, this I think will be extremely helpful to anybody who is preparing for this examination. एक्चुअली मैम आपने जो बोला एकदम काफी सही बोला है. जैसे तो आपने चैप्टर की बात, तो एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्क्राइब, बहुत सिमिलर. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस वर्ड्स एंड. मैम इसी से एक मेरे माइंड में आ रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को लेके बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू अप्रोच दीज, डू दे नीड टू अप्रोच बोथ दीज एग्जाम, बोथ दीज एग्जामिनेशन इन अ सिमिलर पैटर्न, और सम डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस. Yes, this is a common question and I think every aspirant thinks कि क्या पढ़ूं मैं अभी, क्या मैं prelims पढ़ूं या mains पढ़ूं. So let us understand कि इस particular exam में the syllabus of prelims जो आप पढ़ेंगे वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपका mains में पूछा जा रहा है, and mains also have some additional topics. So when you start your preparation, please do not differentiate it between prelims and mains. शुरू में हमें इसको डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू शुड डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करिए कि जैसे आपने हिस्ट्री लिया, इकोनॉमिक्स लिया, ज्योग्राफी पढ़ा, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें. डू नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज द अप्रोच ऑफ बोथ द एग्जाम्स इज डिफरेंट. प्रीलिम्स में आपके पास सामने आंसर दिख रहा है, you are given 4 options, you just have to find out the correct one, and there are 100 questions and they go from current affairs to core polity, core economy, technology. Nowadays science and tech बहुत ज़्यादा कहीं से पूछा जा रहा है. तो you will find the approach of preparing for prelims and mains जो कि completely जो है theoretical है. You have to attempt 9 papers in a span of 5 days. So वो उसके प्रिपरेशन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है आंसर राइटिंग से होगी. तो दोनों का अप्रोच डिफरेंट है. इसमें आप ये कर सकते हैं कि यू कीप प्रिपेयरिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, कीप प्रैक्टिसिंग बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने हैं, जैसे आप हो सकता है वीक में एक बार आप अराउंड 20-25 क्वेश्चंस लगा लीजिए, रिविजन कर लीजिए, या आप पर डे 1 or 2 आंसर राइटिंग कर लीजिए. So this way you will be practicing both for prelims and for mains. And when it comes, generally the exam is in the month of May. Prelims जो रहता है UPSC का. So what you can do is till March
you can study for integrated manner. And फिर March, April 2 and 3 months जो last के होते हैं वो आप dedicatedly prelims को दे सकते हैं. वहां पे फिर you can stop your answer writing and you can only focus on attempting the objective based questions. So preparation integrated रखनी है, लेकिन जब एग्जाम वो वाला स्पेसिफिक फेज ऑफ एग्जाम अप्रोच करता है तो फिर हमें डेडिकेटेडली उसके लिए प्रिपेयर करना है. मैम ये जो मेन और जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट का वेट करते हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा. आप इसको लेके हाउ शुड मीन की तैयारी किस तरह से, आप कह रहे हो कि इंटीग्रेटेड करनी चाहिए, बट मेनली आंसर वो किस तरह, कब स्टार्ट, कब वो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर, किस तरह से आप. Yes, so how to वाला जो है part is what I'll address now. When we are preparing, preparation phases 2-3 हमारे levels होते हैं. पहला होता है कि you are just starting to read the subject. जैसे I'm a new aspirant, I'll pick up an NCERT. But that NCERT will not be able to completely help you in attempting the questions of UPSC. आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. So you'll pick up a standard book. Then you will keep reading the newspaper along with it. Then you will make some consolidated notes of yours. नोट्स जरूरी नहीं है कि आपको हैंड रिटन बनाने हैं, आप ऑनलाइन कंपाइलेशन कर सकते हैं. नोट्स का मतलब ये है कि अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है तो विच सोर्स विल यू रेफर टू, एंड रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग कि सिलेबस बहुत वास्ट है. You have to read everything from environment to economy to history to geography, everything. So revision, if you don't do, you will end up missing on things, you will end up forgetting what you have read. So revision अच्छा हो, इसके लिए आपके notes अच्छे बनने चाहिए. और साथ में हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए आफ्टर यू आर थ्रू सम बेसिक फाउंडेशन नॉलेज. जब आपको कुछ एक अच्छा बेसिक पता चल जाता है that this standard book is good, yeah, this is I have read, after that you can start your answer writing practice. And always remember कि initial के 50 answers आपके 30 to 50 answers will be bad. Okay, it will be average. And if you start comparing your day 1 answers or day 50 के answer with some other copies of toppers or some test series से evaluate करेंगे, obviously हो सकता है कम marks score करें. तो demotivate नहीं होना है. वो जब 50th आपने पार किया उसके बाद आप धीरे धीरे अच्छे आंसर्स लिखना शुरू करेंगे. एंड इसमें यू विल गेट अ हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज क्या करता है, आपके पूरे प्रिपरेशन को एक कंसोलिडेशन देता है. जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये वाला टेस्ट देना है, तो इन दोज 15 डेज आप डेडिकेटेडली उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे. तो दैट प्रिपरेशन विल हैपन इन अ वेरी कंसोलिडेटेड मैनर, बिकॉज कि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है. तो टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू इन दैट वे एंड इट गिव्स यू फीडबैक. सो फीडबैक से बहुत फर्क पड़ता है. अगर हमें थोड़ा कोई बताता है कि कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कैसे लिखना है. एंड कई बार क्या होता है कि जैसे आई प्रिपेयर एट माई होम, सो आई डिड नॉट हैव मेनी पियर्स लाइक हु वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो मैं पियर इवेल्युएशन ज्यादा नहीं करा पाती थी. तो टेस्ट सीरीज बिकॉज क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जिनका खुद के अपना टीम रहता है, टीचर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, तो वो हेल्प कर जाता है. So that's how test series will help you out in this. मैम इसमें इवैल्यूएशन का जैसे बोला, बाद एक बहुत मेजर जो टीचर्स को भी जो चेक कर रहे होते हैं या जो भी चेक कर रहा होता है उसको भी एक में आती है. दूसरा रियलाइज होता है कि जो वर्ड लिमिट है वो बहुत चैलेंजिंग. आई मीन 150 so challenging because the question is so vast and you know it so much and you know so much that it's really difficult to make comprehensive answer. उसमें कोई अगर tips उसको दे सकते हैं? This is a very relevant question. I think this is what जैसे मैं बात कर रही थी कि हमें जो आता है और हमसे जो चाहा गया है, ये दोनों चीजों का डिफरेंस we need to really understand. What happens is we sort of read the topic. जैसे women issues मैंने पढ़ लिया उसमें क्वेश्चन में और मेरे दिमाग में सब कुछ आ गया, everything that I have read about women's issues. Now if I try to include everything, I will overshoot 150 वाला word limit, I will overshoot 250 word limit, and this will spoil my paper. Take every question as a single this thing.
जैसे एक क्वेश्चन है, आपके पास 150 वर्ड्स का लिमिट है, आपके पास 2 प्रिंटेड पेजेस हैं, हो सकता है, या फिर 250 वर्ड्स का आपका लिमिट है और 3 पेजेस का आपका प्रिंटेड पेज का लिमिट है. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन. Then you can pick up on read the question twice. You have to read the question. उसका क्वेश्चन डायरेक्टिव को अंडरलाइन करना है कि क्या एक्सपेक्ट किया गया है, एंड देन धीरे धीरे समझना है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई कैन यूज, कैन आई यूज सम डेफिनेशन, कैन आई यूज सम मैप, कैन आई यूज सम एग्जाम्पल, क्या मुझे पॉइंट में लिखना चाहिए. ये क्वेश्चन होता है कि पॉइंट में लिखे या पैराग्राफ में. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन कह रहा है एन्यूमरेट द रीजंस, तो एन्यूमरेट द रीजंस है तो 1 2 3 4 5 करके रीजंस लिखने हैं. अगर डायमेंशंस पूछ रहा है तो अलग अलग डायमेंशंस हमें अपने खोलने हैं. तो दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी मच डिटेल इन डिकोडिंग द आंसर. एंड जैसा यू वर आस्किंग कि 150 वर्ड में कैसे क्रिस्पली डालना है, दैट यू विल लर्न वंस यू लर्न कि आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है यूपीएससी. जनरली ये होता है कि हम कॉलेज के एग्जाम्स देते हैं या स्कूल के एग्जाम्स देते हैं, तो वी एंड अप राइटिंग वॉट एवर वी नो एंड हमें मार्क्स भी मिल जाते हैं. So that's another story. But UPSC is something where if you beat around the bush, you will not be getting good marks. So you have to just write what is asked. Extras, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें उसमें नहीं देनी है क्योंकि टाइम भी अपने पास बहुत कम रहता है. टाइम की बात अगर मैं करूँ तो एक ये बताना चाहूंगी कि initially when you're practicing answer writing, do not look at time, because at that stage you should be focusing on the quality of answer. धीरे धीरे when you are you are seeing कि मेरा quality of answer writing improve हो रहा है, फिर आप अपना टाइमर लगा लीजिए कि 7 मिनट्स में, 8 मिनट्स में या 10-11 मिनट्स में मुझे इस आंसर को खत्म करना है. तो टाइम को इस तरीके से अपने को मैनेज करना चाहिए. Okay, ma'am, so है so many views on the, आप इसका क्या है, how is it different from, या क्या इसके स्पेशल, so that बाकी सब स्टूडेंट्स पता क्या look. I think thoda your voice is breaking. I couldn't hear your question. If you could repeat it. Ma'am, I have read so many positive about, आप इस बुक का share करेंगे so that the students who have not got the book know what need. Yes. So one special thing apart from everything that I have mentioned before is the snapshots of my personal notes. कई बार ऐसा होता है कि notes कैसे बनाने हैं, newspaper analysis कैसे करना है. These are something which we all face. So I have included a separate section जिसमें 2 मैंने newspaper के articles लिए हैं. One from the Indian Express, one from the Hindu. एंड दोनों को आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इसको कैसे पकड़ना है. मतलब अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें से कैसे हमें एक्सट्रैक्ट निकालना है फॉर गुड पॉइंट्स. एंड दैट इज वन सेक्शन दैट आई थिंक is unique about it. Second, I have included my handwritten notes. I have included all the flowcharts that I had made, या कहीं से I had in my notes copy. तो वो सारे flowcharts मैंने डाले हैं. मेरे handwritten notes के snapshots इसलिए डाले हैं because you don't have to imitate. You just get an idea कि कैसे हम crisply एक पेज में पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं. तो when you make your own notes, they will be a sort of reference for you. Okay. Apart from this, I have also requested 2 of my friends, batchmates, to write philosophical essays, and उनके जो philosophical essays हैं उनको मैंने include किया है इसमें. और this is because essay paper में philosophical essay आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं. So how to handle those kind of essays, how to approach, how to open up the arguments in the essay, that has been included. And I have also analyzed the 2021 mains की questions. So this will really help you कि exactly UPSC जो अभी trend पूछ रहा है, last year जो उसने पूछा है, उन questions को कैसे properly decode करना है, questions answer को कैसे decode करना है, that I have done in one of the chapters named Q&A analysis. So I think these things will really be helpful to people, to the aspirants. There's another question which I personally face a lot from students, and that is medium of answer. लोगों को समझ नहीं आता मैम कि because currently the world, the
situation of our education sector is such that we are living in a bilingual. So English भी आती है, हिंदी भी आती है, but exact answer like कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा वो नहीं है। तो उस पे आपका कुछ आप अगर tips या कुछ गाइडेंस दे सकें। Regarding medium, I'll only say one thing. Whatever medium that you have used for study in your school or college, and in which you are able to make some or write some arguments, क्योंकि बहुत किताब बहुत बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें उसमें गैदर करना पड़ेगा, and you'll have to reprocess in your head, you'll have to think of arguments what to write. So if you have done all of that in Hindi throughout your school years and your college, then you should go ahead for that medium. बिल्कुल अभी if you look at the results this year of UPSE, you will find that Hindi medium students have done so well. They've gotten ranks in the top 20. So the toppers have shown that Hindi medium or any medium does not make a difference. The choice of medium depends on the language that you have used for study and the language in which you can express your views properly. जो मेजर पार्ट आएगा आपका एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज का आएगा। तो आप भले किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो, पर क्या आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कैसे एक पर्टिकुलर मीडियम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट शुड बी अ फैक्टर। एंड if you are able to do it properly in any of the either of the medium, English या हिंदी या even regional language for that matter, आपको वही चूज करना चाहिए। एक there's another question that while for UPSC, and that is ये ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करें, समझ नहीं आता है, हाउ डिड approach in options? Yes, optionals is a very important part of our final score. This is because 250 marks के दो papers यानी सीधे 500 marks हमारे उसमें allotted रहते हैं, and if you prepare properly for optionals, you can easily extract 300 to 320 marks out of it. Now अगर final score में आप इतने अच्छे marks optional से खींच लोगे, तो आपका score definitely improve होना है. So इसीलिए optional selection becomes extremely important. I have included a separate chapter on how to choose an optional subject in the book as well. And briefly, मैं यही बताना चाहूंगी कि you can choose the subject which you have chosen, we have studied in your graduation. That is one option. अगर आपका वो सब्जेक्ट यूपीएससी में नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपका उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी होल्ड नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर यू शुड गो ऑन टू रीड द लिस्ट ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड सी कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट है। पर ये सब करने से पहले डोंट डू इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेपरेशन। कई बार ऐसा होता है एस्पिरेंट्स टॉक आस्क मी अबाउट प्रेपरेशन एंड देन जस्ट आस्क कि कौन सा ऑप्शन। सो जब तक यू हैव नॉट रेड योर बेसिक फाउंडेशन जनरल स्टडीज, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के पीछे ऑप्शनल सिलेक्शन के पीछे मत भागिए। दिस इज बिकॉज व्हेन यू रीड योर जीएस, तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, तो यू विल सी कि कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा यू थिंक इज गुड फॉर मी, विच यू आर एंजॉइंग फॉर रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ऑप्शनल में आपको मास्टर्स लेवल तक का पढ़ना पड़ता है, काफी डिटेल में अपने को जाना पड़ता है। तो प्लीज चूज अ सब्जेक्ट विच यू आर इंटरेस्टेड इन एंड प्लीज डू नॉट सी कि टॉपर्स क्या ले रहे हैं या कौन सा सब्जेक्ट इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स हमें बिल्कुल नहीं सोचने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत अच्छा गाइडेंस अवेलेबल है, क्या हमें कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट से हमें कोई गाइडेंस मिल सकता है, क्या हम कोई फीडबैक आंसर्स पे ले सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शनल चूज करना चाहिए। मैम एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में कि ऑप्शनल जो है यूजुअली स्टूडेंट्स, जैसे आपने पॉइंट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑप्शन लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं वाला ज्यादा। प्लीज आप क्या बता सकते हैं कि क्या ऐसा होता है कि
होता है बहुत ज्यादा, कुछ करनी नहीं होता है, सब्जेक्ट बहुत यूपीएससी प्यारा हो जाता है, उसमें स्कोर्स सबसे ज्यादा आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं चूज करना चाहिए, राइट? नहीं, डेफिनेटली नॉट। इसमें जो है यूपीएससी प्रॉपरली उसको एनालाइज भी करता है जब फाइनल स्कोर्स निकलते हैं। तो हर सब्जेक्ट को भी अलग से राशन आउट हो जाता है सब्जेक्ट कि अगर इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो किस परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इसमें से जाना है। सो प्लीज डू नॉट गो बाय द फैक्ट कि सब लोग इसमें ले रहे हैं या इसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादा मार्क्स आप तभी ले आओगे जब आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो। So, ultimately, it is about performing well in that subject. So, if you can prepare properly on it, if you can get good guidance on it, and if you can get your answer copies evaluated, और आपका interest है, तो definitely you should go ahead with that subject. Okay. Well, thank you so much, ma'am. It was a very conversation with you. बहुत सारे questions के आंसर, I hope कि हमारे कैंडिडेट्स हमारे को बहुत सारी चीजों के आंसर, बहुत डाउट क्लियर होंगे. Thank you so much for joining us, UPSC guys. It was amazing talking to you. Thank you. Thank you so much to all the aspirants, and I wish them all the very best. Prepare well and strategize your time properly, and practice answer writing. And I hope that whenever you see my book, it will definitely help you out in your preparation. You can share your feedback to me in all the platforms that are available. Thank you so much. Thank you, ma'am.